All to my channel TheLawyer'sWeb. In this video we are going to learn about how to draft a cease and desist notice for the purpose of preventing or restraining any individual or entity from indulging into the activities of copying of trademark and the infringement of copyrights. So without taking a lot of time, let's start the today's video. Now, before proceeding towards the explanation of the drafting procedure, what are the things that needs to be included and what not, through the help of a particular cease and desist notice sample, it is very much essential for all of us to know what actually cease and desist notice means. So, a cease and desist notice is particularly a legal letter that is sent to an individual or an entity to stop an actions like copying of trademark, infringement of copyrights, and that should be before the initiation of any type of legal proceeding against that particular individual or client. Now, after understanding what actually cease and desist notice means, we should look upon the sample of the cease and desist notice and explain about the procedure and the intricacies of the cease and desist notice. So cease and desist notice. Before explaining about the procedure, let's go back about the where we have in this on previous videos where I have explained about the drafting of legal notices, reply to legal notices, वेयर आई हैव इंस्ट्रक्टर जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि इंक्लूड करना एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है लाइक डेट एड्रेस ऑफ द पर्सन और द एंटिटी टू होम दिस नोटिस टू बी सेंट बाय रजिस्टर पोर्ट थ्रू विच द notice is to be sent, salutation like dear sir or ma'am to whom we are addressing this particular notice, और सबसे मेन जहाँ पे हम ये चीज़ मेंशन करेंगे कि जो ये cease and desist नोटिस है या जो भी नोटिस भेजा जा रहा है ये ऑन द इंस्ट्रक्शन एंड द बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन फर्निश्ड बाय द क्लाइंट, उसके बेसिस पे ये नोटिस इशू किया जा रहा है आपके अगेंस्ट. सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है एक लीगल डॉक्यूमेंट में, और ये चीज़ें आप हमारे प्रीवियस वीडियो में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं. सो आफ्टर मेंशनिंग दिस ऑल थिंग्स नाउ उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं सबसे मेन कंटेंशन पे लाइक मेंशनिंग अबाउट दिस फैक्ट्स एंड सिनेरियो कि क्या फैक्ट्स है क्या सिनेरियो है जिसके रिस्पेक्ट में मैं ये सीज एंड डिसीज नोटिस आपको ये भेज रहा हूँ, ये सर्व कर रहा हूँ, और क्या अंडर विच लॉ और क्या किस लॉ के इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर अमाउंट है जो हम मेरे क्लाइंट को सर्व है, ये सब चीज़ें हम आगे इस डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं मेंशन करना. तो ये समझने के लिए क्या फैक्ट्स एंड सिनेरियो मेंशन करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं. लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ माइन, if I am a businessman and indulging into the activities of manufacturing of any particular type of product, and I have kept a very unique name that has been registered under the Trademark Act 1999, and also for the packaging of that particular product मैंने एक बहुत ही यूनिक कवर बैग और यूनिक पैकेज तैयार किया है विद द इंक्लूजन ऑफ different combination of colors, inclusion of the images, shapes and logos, this type ये सब चीज़ें मैंने उसमें मेंशन किए टू मेक अ वेरी यूनिक कवर बैग और टू मेक to not clash with the packaging with of the other products or the products of other entity, ये सब चीज़ें. उसके बाद जो भी ये लाइक जो नाम है उसको मैंने रजिस्टर करवाया अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, और जो मेरा पैकेज है जो यूनिक कवर बैग है उसे कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर टू गेन एन एक्सक्लूसिव राइट और टू रिस्ट्रेन अदर पीपल फ्रॉम इंडल्जिंग इनटू type of activities of copying of trademark or the infringement of copyrights. तो ये सब चीज़ें,
उसके बाद हम ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं, लाइक अगर हमने जो नाम चुना उसको हमने रजिस्टर करवाया अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो उसके एक हम टेबुलर फॉर्म में बनाकर बता सकते हैं कि अंडर विच क्लास इट हैज बीन ग्रांट द ट्रेडमार्क हैज बीन ग्रांटेड, ऑफ अंडर विच and what trademark number has been allocated to my particular brand name or the product name. तो जो क्लास की बात अगर हम करते हैं तो क्लास की बात ये मैंने क्लियरली आपको बताई है कि जैसे कि आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इस क्लास के अंदर फॉल करेगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि हाउ टू कैरी अ ट्रेडमार्क सर्च, जहाँ पे मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि यू कैन क्लासिफाई, यू कैन कैटेगराइज दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉल्स विद इन दिस पर्टिकुलर क्लास। तो ये सब चीज़ें उसके बाद मेंशन करने के बाद ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है मेंशन करना कि लाइक आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट नेम है, और जो पैकेज है जहाँ पे आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, जहाँ पे आपने कॉपीराइट गेन किया अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957, ये किस पर्टिकुलर ईयर में आपने एक्वायर किया, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर ये आपका जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है ये कंटिन्यू हो रहा है विदाउट एनी क्लैशिंग with any product or without clashing with the product of any other entity or an individual। तो ये चीज़ है। और उसके बाद इन एडिशन टू दैट जो जुरिस्डिक्शन है वो मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है वाइल ड्राफ्टिंग द सीज एंड लीगल नोटिस, कि आपका जो प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में डील करता है, और ये इसके मेन एरिया है जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर नेम से रजिस्टर्ड है और ये डील मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें हमने बात की फैक्ट्स एंड सिनेरियो की। About facts and scenario, it is very much important to mention some of the important contention, where it is to mention that my client found that you have brought about some identical bags with the same type of color combination that we have used, the same printed checks that we have used, and that activity of copying of the same color combination, using of same color combination printed checks, led to the infringement of the copyright of my client, and for that you are liable under section 63 of Copyright Act 1957 for that particular activity, and you are liable for both criminal action as well as civil action for the damages mm, to my client that happened due to the indulging of activities like the copying of same color combination and the printed check. After that, the sixth pointer states about the different demands that my client is asking from that particular person who is indulged in the process of copying of same color combination or the infringement of copyright. Now, if we will see, there are some of the जो demands जो mention करते हैं, like these are the demands that needs to be fulfilled or should be complied by the party who has infringed the copyright within the stipulated period of time. Like the very first that has been mentioned, to immediately seize and desist from infringing color scheme, get-up, and description of the product, including the fonts and color combination in respect of in your brand. So it's basically about restricting that person from infringing further about any that color scheme by using that description of the product, including the fonts and color combination in respect to the party's brand. Second, to hand over to my client or their authorized representatives all labels, advertisements, price lists, pamphlets, packaging bags and any other material। तो और जितने भी चीज़ें हैं जो कि लाइक जो भी लेवल, जो भी एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पैकेजिंग और जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, उन सभी को जो वो ऑथराइज्ड है वो सभी हैंड ओवर होने चाहिए मेरे क्लाइंट को, क्योंकि दे ऑल आर इन्फ्रिंजिंग द कॉपीराइट ऑफ माय क्लाइंट। उसके बाद जो थर्ड होता है
उसमें मोस्टली जो एंटिटी जो इंडिविजुअल होते हैं जो कि जिनके कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट वो मोस्टली डिमांड करते हैं और अबाउट द रिटेन अंडरटेकिंग जहाँ पे जो एंटिटी है जो इन्फ्रिंज किए हैं कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वो उस अंडरटेकिंग में ये मेंशन करें कि इन फ्यूचर दे आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन और दैट पर्टिकुलर यूनिक नेम और यूनिक पैकेजिंग or label so that they not create any kind of confusion in the minds of the consumer and they are not further indulged into the activity of copyright infringement or the trademark infringement. And lastly, they mention about the compensation, like any particular amount which the client is asking for or which is suitable to the in relation to the damages that my client faces. तो वो कंपनसेशन डिमांड करते हैं उसे मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आफ्टर दैट in most of the cases the client also asks for the cost of issuing the notice to that particular party who has uh, mm, created damages who has led to the damage to my client ये सभी चीज़ें जो होती हैं जो ये डिमांड्स किए जाते हैं एक क्लाइंट के द्वारा एंड ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग वाइल ड्राफ्टिंग ऑफ सीज एंड डिसीज नोटिस फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एंड द ट्रेडमार्क तो ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद उसके बाद नीचे सबसे वो मेंशन करना जरूरी होता है अपना डेजिग्नेशन लाइक योर्स फेथफुली एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द एडवोकेट हु इज सेंडिंग दिस पर्टिकुलर सीज एंड डिसीज नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ सीज एंड डिसीज नोटिस So these are the intricacies and the procedure that needs to be followed while drafting a cease and desist notice. Now, hope you all like this particular video on how to draft cease and desist notice and clearly able to understand through the help of the sample and the explanation with the help of a created scenario or the help of a hypothetical situation. So if you like this particular video, so please like, subscribe, share and press the bell icon for the regular notification. Thank you everyone.